Hi everyone. So welcome to this new series on modern Indian history. The first video that I thought that should be made, as I have done it for the other subjects also, is about that what are your expectations, or let's say what expectations could you have from this modern Indian history lecture series, and how you can yourself prepare history. This is in history general, okay? I mean considering ancient, medieval, modern world, etc. Because I would be giving you a rough content list for all of that also, but the lecture series will only be about the modern Indian history. So using the NCRTs and the advanced textbooks, you can just see that how do you prepare out that. This is how your syllabus looks like. We will just see that more of the detail here. This kind of series actually about the expectations and using that how the preparation approach could be done, I have already done for your geography, polity, and your environment and ecology. Now these are the four subjects. I am starting a proper sequence from May 2nd, 2022, as you guys know in case you have checked the earlier video. From Monday to Friday, 5 days a week, you would be getting these GS subjects on a specific time. So each of these four are allotted a specific time. For that, you can just check the strategy video in which I have talked about that what are your expectations for the next 4 to 5 months from this particular channel. All of the links are also given in the description section. Please do like, comment, share and subscribe if you feel the contents are relevant to you. Now let's start firstly with the NCRT and let's see, because I am giving you about history in general first, and then I will be giving you those micro topics to show you that what are your expectations you can have from the modern Indian history series. For example, if I have to show you something like this, so I try to bifurcate the major topic into the subtopic then further subtopic. Okay, this is like I have tried to bifurcate it. So all of those also we will try to see. But firstly, let's see the quick contents which are given in your NCRT. For example, class 6 NCRT deals with your ancient Indian history. These are your content list, because most of the people don't even know that which NCRT constitutes what. So that is why I have attached everything here. Class 7 NCRT deals with your medieval Indian history. These are your topics given here. Class 8 deals with your modern Indian history. So हमारा जो focus होगा in the lecture series, it will revolve around these topics. ठीक है? Then if you go to class 9th, 10th and 11th, I'm talking about of course the new NCRTs, उसी से लिया हुआ content है सारा. So world history is given in your class 9, 10th and 11th. Now you don't have to actually read all the chapters. For example, if you try to see the relevance, तो class 9 से you can read about the French Revolution, socialism in Europe and the Russian Revolution, Nazism and the rise of Hitler. Colonialism and pastoralism is what you can actually ignore. Class 10th में the rise of the nationalism in Europe could be done. थोड़ा सा nationalism in India could be done, but it will be about modern Indian history related, so that will anyways be covered there. The making of a global world and the age of this could be avoided, but the age of industrialization could be done. Print culture and the modern world could be avoided absolutely. In class 11th series, the initial few sections. For example, this talks about early societies, this talks about empires, this talks about changing traditions, is what we can actually ignore. Nothing of this sort is needed for your mains examination. Towards modernization, because now we are talking about the 18th century, and this is your mains syllabus, what is precisely prescribed is for world history that you have to do the topics from 18th century like industrial revolution, etc. So this section could be done from 11th and the other sections could be ignored. But of course the 11th NCRT is not sufficient. I mean the whole NCRT of 9th, 10th and 11th is not sufficient to cover the world history in detail. So I've already given you the references for that in the decoding syllabus video. Decoding GS1 mains syllabus. Now this is also a series that I have started, not only started but completed also for GS1, 2 and 3. The whole syllabus has been decoded in several smaller bits. Do check it from there. Okay. When we come to the class 12th NCRT, so it has 3 parts. The first part has these themes. It is given not in a chronological manner but in a theme manner. Theme manner, which means, for example, if they have to talk about states and economy, they give you the whole time frame of that. If they have to talk about the society like kinship, caste, class, they give you the whole time frame for that. If they have to talk about the cultural developments, they give you the whole time for that. So that is your ancient Indian history. Part 2 is your medieval. It has another themes like, talking about the travelers, Bhakti Sufi tradition, Vijayanagar Empire, peasant zamindars, etc. Mughal Empire mein, and this is also Mughal Empire. So this is your medieval Indian history. And the part 3 that we will be concerned with here
would be on modern Indian history. So it has certain themes like colonialism, rebels and the Raj, which is about 1857 revolt, colonial cities, urbanization, etc., Mahatma Gandhi and the nationalist movement, partition and framing of the constitution. So for the modern Indian history, I hope that is clear to you that only the content are relevant from class 12th, third part which is modern Indian history, and your class 8th modern Indian history. ठीक है, बाकी का I have given you कहाँ से क्या हो जाएगा. So for modern Indian history, these are your NCERT's basic readings. Another standard book that you can use is either Spectrum or the book by Bipin Chandra. So it is either coming, I think, I don't remember the publication name, but you can just check that out. Online you will also get it, offline also you will get it. So either you do that from the publication one or the old NCERT, I think class 12th or 11, but old NCERT by Bipin Chandra. Both of them have the same content. Okay, because the author is same. It is just that either one was just NCERT and other is by some publication. So any one you can get, or any other relevant textbook also if you feel, because nowadays there are multiple books in the market and some of them are really good also for covering the modern Indian history part. But one advanced book would be needed and your NCERTs would be needed, and more or less you can rely on the lectures also, because I would anyways be combining it from different sources. My work is to do the same for you so that you don't have to get n number of books for yourself, and I will be collaborating it with the previous year questions of both prelims and mains accordingly, right? Okay, let's see the syllabus. So the prelim syllabus reads like history of India and the Indian national movement. That's it. So you have to cover it like the whole one. And GS का one में भी mains में जो part है modern Indian history के लिए these two subsections are given, which I have again explained in greater detail in the decoding video. आप उसको वहाँ से आराम से देख लीजिए. Let's the detailed video. This is what I was telling कि this I have already uploaded. ठीक है, decoding syllabus. तो अलग अलग सेक्शंस में किया है. GS1 के लिए आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री अलग किया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह अलग किया है, तो वो आप वहाँ से देख लें. Now the weekly schedules, as I have told, will be provided, which will be topic wise. ठीक है, because in the advanced stage only I cannot give you like for the next 5 months what will be the micro topics covered. वो नहीं संभव है, but I will be showing you the breaking up of those topics into micro one right now. But from Monday to Friday, जो हम आपका सीरीज शुरू कर रहे हैं 2nd of May से, you will be getting the weekly schedules and the classes timings are 9 PM. ठीक है, for modern Indian history, and these are the classes timings for the other videos also. Indian polity 9 AM, geography 12 noon, environment ecology 6 PM, modern Indian history 9 PM. So you can just check that. Now let's see what are the broad topics we are covering. So I have given you the list of the broad topics here, but I will not read it out here because what I have done is to break those broader topics into sub topics also. तो यहीं से उसको एक बार देख लेते हैं. broad topics आप आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा. weekly schedule आपको already दे ही दिया जाएगा. ठीक है, so let's say we start our story of modern Indian history with understanding that what was the situation in India on the eve of the British conquest. As in जब Britishers आए इंडिया में तो इंडिया की सिचुएशन क्या थी. उसके लिए थोड़ा हमें मिडिएवल के बैकग्राउंड में भी जाना होता है, विच इज़ डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस. डायरेक्टली जो सिलेबस में टाइम फ्रेम दिया गया है आपका मिड से, वो थोड़ा यहाँ से शुरू होता है. बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट, बिकॉज इसके अलावा तो हम कंटिन्यूएशन में स्टोरी विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट. सो फॉर एग्जाम्पल उसको वी विल ब्रेक इट इन फर्दर सेक्शंस, लाइक वी विल टॉक अबाउट डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, मिडिएवल का है बट हम समझेंगे एंड, टुवर्ड्स द एंड, जो 1707 में स्टार्ट हुआ फ्रॉम द डेथ ऑफ द औरंगजेब. ठीक है, वहाँ से होते होते फाइनली मुगल एम्पायर का एंड तो 58 में हुआ, लेकिन चीज़ें जो डिक्लाइन होनी थी वो यहीं से शुरू हो गई थी. सो हाउ द थिंग्स हैपेंड, व्हाट अबाउट द लेटर मुगल्स, हु वर द लेटर मुगल्स, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स, एंड व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. यहाँ से हम स्टोरी को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. देन वी विल सी कि अब जब यहाँ पर चैलेंजेस हो रहे थे एंड देयर वर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, सर्टन कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, एंड इट वाज ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स द डिक्लाइन और डाउनफॉल हो रहा था, देन देयर वर अपीयरेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स. So how did these regional states started to rise? Now they were categorized into certain groupings like successor states, new states, independent kingdoms, etc. So what are those states? उसमें कौन कौन किस कैटेगरी में है, और इसमें से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. इस सेक्शन से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है apart from the prelims, and I will be showing you all of that. ठीक है, so please don't take these sections lightly. And then we will have to understand the situation of 18th century India, socio-economic conditions on the eve of the British conquest. Then we move on to the next point कि ठीक है, हमने बैकग्राउंड तो समझ लिया कि हालात क्या थे. उस हालात में there were certain outsiders which came to India. We know about the advent or the arrival of the Europeans in India, right?
Now these Europeans, they had, I mean these were the Europeans who were present there, Portuguese, Dutch, English, Danes, French. अब ये किस सीक्वेंस में आए, हाउ मेनी ऑफ देम सर्वाइव्ड, हाउ मेनी ऑफ देम लेफ्ट, बिकॉज वी नो इन द एंड हु रिमेन्ड वॉज योर इंग्लिश और ब्रिटिश, ठीक है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई थी. तो आखिर इतनी सारी आई थी, एक ही क्यों रह गई, बाकी को कैसे जाना पड़ा, ठीक है. दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड आई मीन ट्राई टू आंसर, दैट वी विल ट्राई टू फिगर आउट अगैन बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज उससे दोनों तरह के सवाल बन सकते हैं. अब इंग्लिश तो रह गई, ब्रिटिश तो रह गई, सो हाउ डिड दे राइज, उनकी सुप्रीमेसी फिर इंक्रीज़ कैसे होनी शुरू हुई. टू इंक्रीज देयर सुप्रीमेसी दे हैड द मेजर चैलेंजर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच. उनको उन्होंने कैसे हटाया, कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच को हटाया ब्रिटिश ने, ठीक है, उनकी सुप्रीमेसी बढ़ती चली गई. फर्दर टू इंक्रीज देयर सुप्रीमेसी दे स्टार्टेड टू कंट्रोल स्पेशली द ईस्टर्न रीजन लाइक बंगाल, बिहार वाला जो रीजन है, ठीक है. तो बैटल हुए प्लासी और बक्सर के, वेरी इंपॉर्टेंट वंस, वहाँ से और चीज़ें डेवलप होंगी. नाउ दैट दे हैव रिजन टू पावर, नाउ दैट द ब्रिटिश हैज़ रिजन टू पावर, देयर वॉज एक्सपेंशन ऑफ देयर रूल एंड कंसोलिडेशन ऑफ देयर पावर ऑल्सो, बिकॉज इतने साल तक अगर वो सर्वाइव किए. बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था. इंडिपेंडेंस कब मिला है हमें, when did we get the independence, 1947. so it's roughly 200 years, almost 200 years, and आए तो वो और पहले ही थे, बट चलो हम इसको भी मेजर मान लें तो भी अराउंड 200 years. so क्या करा उन्होंने, ऐसा करा तो होगा ना कुछ. so that expansion and consolidation has to be studied. so they fought different wars, and this is what we will figure. They tried to eliminate the local powers first, and they also tried to eliminate the neighboring powers and have control over them so that they could expand themselves and consolidate their power in India, the Indian subcontinent that we understand. Then because they were ruling, there were impacts also, ठीक है. सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम समझेंगे, दिस विल बी अगेन फर्दर सब डिवाइडेड. ये तो बस एक मेजर टॉपिक्स है, इट विल ऑलवेज बी लाइक बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती जाएंगी. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. So for example, economic impact will deal with things like deindustrialization, commercialization of agriculture, land revenue systems, etc. Then अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ भी ये बढ़ रहे थे, ये कुछ एक्ट्स ला रहे थे रूल करने के लिए, विच यू ऑल्सो स्टडी इन पॉलिटी. So if you have done my strategy video of polity, that what are your expectations and how can you prepare, therein I have told you that you should collaborate this part of these acts वाला thing with your modern Indian history. ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ से जब आप उसको रिलेट करके करोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा करने में, बिकॉज नाउ हियर यू विल हैव द स्टोरी, पीछे का आगे का, एंड यू विल ऑल्सो नो दैट वॉट वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दोज एक्ट्स वर स्टार्टेड विथ, and then how did it lead to the final constitutional development in the case of independent India also, ठीक है. so उसको हम different parts में करेंगे क्योंकि हम time frame के हिसाब से चीज़ें समझेंगे. then certain administrative and judicial developments by the British, for example civil services में क्या changes किए, army, police, judiciary etc. so all the major administrative changes हम समझेंगे especially after 1857. अब बात है कि इस 1857 के केस में जब ये रिवोल्ट हुआ, सो वी विल ऑल्सो हैव टू सी कि इसके पहले और इसके बाद का क्या सिचुएशन था, ठीक है. सो द पॉपुलर अपराइजिंग्स वी विल सी फर्स्टली अप टू 1857, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ देम, नेचर क्या था, लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस एट्सेट्रा. सिविल अपराइजिंग्स थी, उसमें पेजेंट्स थी, ट्राइबल्स की थी, एंड ऑल ऑफ दीज ऑन रीजनल बेसिस वी विल अंडरस्टैंड. ईस्टर्न में कैसे था, वेस्टर्न में, नदर्न में, सदर्न में, सेंट्रल में एट्सेट्रा. Then what exactly led to the revolt of 1857, which is considered as the first war of independence. So the causes of that, spread of that, leaders, consequences, etc. Then did the revolt just was the last thing? अगर ऐसा होता तो इंडिपेंडेंस यहीं मिल गई होती, पर यहाँ से तो फिर और करीबन 100 साल लगे, 1947-90 ईयर्स लगे होने में, ठीक है. So what further led? So post 1857, what all things happened? So like, you know, the uprisings of the peasant class or the working class is what we will figure out. Then we had a pura ka pura reform movement. This again I have decoded in your I have given in your that decoding syllabus. आप उसमें अच्छे से देखिएगा. I've talked about these movements there. that you have to discuss the social religious reform movements. उसको भी हम दो एस्पेक्ट में करेंगे. वो दो एस्पेक्ट क्या होंगे आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि हम उसको रिलीजन प्लस रीजन दोनों वाइज जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे. देन राइज ऑफ नेशनलिज्म, कांग्रेस, इनिशियल फेज ऑफ ऑल ऑफ दैट, ये सब भी हमको समझने की कोशिश करनी है. अब क्या हो रहा है कि यहाँ तक क्या हो रहे हैं, हमारे लोकल चीज़ें जो हैं वो चली आ रही हैं, अलग अलग एस्पेक्ट में मूवमेंट्स हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से रिवोल्ट कर रहे हैं. But there was no one pan-India organization. That pan-India organization was formed in a Indian National Congress,
in the form of Indian National Congress. But before that, we had certain factors which resulted in the rise of nationalism, and there were certain pre-Congress associations which were playing their role on a regional basis. Then came the formation of Indian National Congress. Then came this time जहाँ कांग्रेस का रोल आना शुरू हो गया, ठीक है. और फिर उनका जो इनिशियल फेज होगा, द मॉडरेट फेज, दैट वे, बिकॉज द कांग्रेस वॉज फाउंड इन द ईयर 1885. सो द फर्स्ट 20 years was about the moderate phase. उसको हम समझेंगे, then how it was different from the other phase. Now after that the next phase in the Congress was of militant nationalism, जिसको आप extremist phase भी समझते हो. So how are the things different and what led to this happening, हम वो समझेंगे. बीच में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का भी ओवरलैप होगा, वो भी समझेंगे. वर्ल्ड वॉर 1 आ गया उसी बीच में, एंड हाउ द नेशनलिस्ट्स रिस्पॉन्डेड टू दैट, वो भी समझेंगे. उसी में फर्दर थिंग्स लाइक होम रूल लीग मूवमेंट, लखनऊ सेशन कांग्रेस की, एट्सेट्रा विल कम. देन गांधीज इमर्जेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो महात्मा गांधी के इमर्जेंस को हम समझेंगे. लीडिंग ऑन टू द टॉपिक्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, एट्सेट्रा. सो व्हाट वर द इश्यूज दैट डेल्ट विद दैट. Further, all of these section like Rowlatt Act हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर, etc. Then constitutional development, as I have told, हम parts में करेंगे because we are doing it in chronology. So जैसे जैसे वो time frame year आते जाएगा, हम उसके बीच के चीज़ों को जो है वो करते जाएंगे, ठीक है. Then emergence of the Swarajist socialist ideas, phase 2 of the revolutionary activities. phase 1 हम समझ रहे हैं, बीच में और चीज़ें हुई, phase 2 भी आया, फिर उसको समझेंगे. Then important other topics like communalism, Simon Commission, Nehru Report. Again the part 2 of the peasants and the workers movement. पहले हमने करा था यहाँ पर, ठीक है. That was still here. But then what after that? उसके बाद भी चीज़ें हुई हैं. उसके बाद भी चीज़ें हुई हैं. So we will see that happening in the decades of 1920s and 30s. Then civil disobedience movement, round table conferences, communal award. Then the part 3 of the constitutional development, the last phase of it, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्ट था. और उसके बाद सीधे हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया इन द ईयर 1947. उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस जो है वो मिल गई. मूविंग ऑन टू द इलेक्शन ऑफ 1937, how the Congress formed ministries and they ruled in certain provinces, but then they had to resign because certain things happened because of World War II and the nationalist response to it. तो हमें दोनों वर्ल्ड वॉर के केस में उसको समझना होगा. And then the final lap of the whole thing happening, Quit India movement, demand for Pakistan and the Indian National Army aspect, and the last one post war, which is World War II ख़त्म हो रहा है. तो उसमें क्या फेज़ आ रहा है 45 to 47 में. So World War II का impact, British policy, cabinet mission, interim government, etc. And then it will be followed up by communalism का another aspect, because the extreme form of communalism was the partition, जिसके वजह से ही सब कुछ जो है वो इंडिया में चेंज हो गया, ठीक है. ऑफ कोर्स लीडिंग टू द फ्रीडम. सो वी हैड द हैप्पी मूवमेंट ऑल्सो एंड वी हैड द very disastrous moment also, and we will do that combining. And certain additional topics like development of Indian press, education, etc. So this is how I have bifurcated it based on the content जो book में ही दी होती है. It's not something I've done from my side, but उसी को थोड़ा सा logically arrange करके पेश करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड ये कुछ और मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके अभी वहीं के हेडिंग्स में थे, उसी को मैंने यहाँ दे दिया था. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइज ऑफ सुप्रीमेसी, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, ये सब अभी आपको दिखाया ही है. दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन मल्टीपल पार्ट्स. देन एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, 57 के आगे पीछे, सोशियो कल्चरल, नेशनलिज्म, कांग्रेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दैट. वर्ल्ड वॉर का दोनों एस्पेक्ट, इमर्जेंस ऑफ गांधी, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट मूवमेंट्स लाइक पेजेंट, वर्कर, स्टेट्स, पीपल. So this is not in as such any chronological manner, it is just the topic, but this is what actually you can consider. So I'll be sharing this PDF with you also. You don't have to worry, but you just have to subscribe to that Telegram channel, and let me know in the comment section, do you find this video helpful, and are you ready for the first class, proper scheduled class जो हम करेंगे of the modern Indian history from the next day, and we will have a proper study plan also. Hope these things are helpful to you. This will be coupled up with previous year questions. Please do not worry about it. Thank you so much guys. Take care till then. Bye bye.